the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. The kind of life that you're experiencing right now is the life that you are producing by your sowing every एक day. तरह की जिंदगी जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो वो यह है कि तुम बो कर वापिस उसे पाने लायक तुम्हें बोना Every चाहिए। day you have opportunities to sow. हर एक दिन जो तुम्हारे पास मौके हैं कि तुम बो, Plenty of opportunities बहुत सारे मौके हैं to show mercy, दया दिखाने के लिए, to show kindness, एक तरह की दयावंत बनने to के लिए, give forgiveness, पापों की क्षमा करने के लिए and to give to someone. और किसी को देने के लिए। You know, you have plenty of opportunities. बहुत सारे मौके आपकी जिंदगी में हैं। And a lot of us don't make use of that opportunities to give forgiveness, to give mercy, to give love. Therefore, we don't get it. हम में ऐसे बहुत सारे लोगों के पास ऐसे मौके होने के बाद भी दया दिखाने के लिए, बिल्कुल दयावंत बनने के लिए, क्षमा करने के लिए ऐसे मौके होने के बावजूद भी हम उसे नहीं कर पाते हैं। And on the contrary, we sow the wrong things often and then we get it back. और उसके बजाय हम क्या करते हैं कि उल्टे चीजों को बोते हैं और उन्हीं चीजों को वापस हम पाने लगते हैं। Every time a husband and wife is having a problem, हर एक बार जब पति पत्नी के बीच में कोई समस्या होती है, sowing and reaping is working. बोने और काटने वाली बात वहां काम करती है। He said something yesterday, it's coming back to him today. Good measure, pressed down, shaken together, running over. उसने कल कुछ कहा और आज जो है दबा दबा कर हिला कर अच्छे माप से वापस आ रहा है। Sometimes you did it last year and it comes back good measure, pressed down, shaken together. कभी कभी आपने पिछले साल किया, वो अच्छे माप से दबा दबा कर हिला कर वापस आ रहा But it है। will come. वो जरूर आएगा, Surely it will come. निश्चय रूप से वो आएगा। Some things take longer to come. कुछ चीजें जो है थोड़ा समय लगता है आने Some में, things come back very quickly. कुछ चीजें बहुत ही जल्दी आने लगती हैं। Some have truckloads coming in their direction. The कुछ wrong लोगों की things. जिंदगी में तो बहुत बड़े बड़े ट्रक लोड्स उनकी जिंदगी में आने wrong लगती things. हैं, गलत चीजें, Because they have given wrong things and it's coming to them. Good measure, pressed down, shaken together. क्योंकि उन्हें गलत चीजें दिए हैं और अच्छे माप से दबा कर हिला कर वापस आ रहा है। Now, first they got to stop that. सबसे पहले उन्हें उसे रोकना है, इन सभी चीजों को रोकना होगा। And then they have to make another kind of reaping to happen. फिर उसके बाद जो दूसरे तरह का जो कटनी है उसके बारे में सोचना You होगा। see, sowing and reaping is so real. देखिए, बोना और काटना बिल्कुल सच बात है। Real in every area of your life. तुम्हारी जिंदगी के हर एक भाग में इतना सच्चा है वह। We must make use of every opportunity to sow good things so that we may reap tomorrow good things. हमारी जिंदगी के हर एक अच्छे मौकों को हमें जो है बोने और अच्छे चीजों को काटने लायक जो है उसे उपयोगी बना लेना That's चाहिए। how you reap favor. इसी तरह तुम दया कमाते हो, That's how you reap goodness from others. इसी तरह दूसरों से जो है भलाइयों को आप काट सकते And हो, that's the way you reap finances also. और इसी रीति से तुम आर्थिक स्थितियों को भी काटते हो। So it's always sowing and reaping. हर वक्त बोना और काटना है। Now just imagine a farmer, getting it wrong, thinking that if he reaped well, then he'll sow. देखिए, एक किसान जो है गलत रूप से उसे सूचना मिलती है और वो कहता है कि अगर वो अच्छा काटेगा तो अच्छा बोने लगेगा। Or, like I said, like we've been looking at the laws of obedience and diligence and faith. जैसे वो कुछ व्यवस्था को हमने पहले देखा था, कामकाजी, आज्ञाकारी और विश्वास। In this, sometimes some people have a lot of faith. इसमें कभी-कभी कुछ लोगों के पास ज्यादा विश्वास होता है। They are faith people. वो विश्वास के लोग हैं।
They want to confess this, they want to confess that, they want to confess that they're going to get truckloads of this and truckloads of that. वे इसे अंगीकार करना चाहते हैं, उसे अंगीकार करना चाहते हैं, वे ट्रकलोड भरे चीजों को पाना चाहते हैं, ऐसा This अंगीकार करते blessing will हैं। come and that blessing will ये come. आशीष आएगा, वो आशीष आएगा, इसके बारे में They're सोचते हैं। good at confessing and they're good at faith. वे अंगीकार करने में और विश्वास में बहुत ही अच्छे हैं, But they are not good in diligence and obedience. पर वे कामकाजी और आज्ञाकारी में उतने अच्छे नहीं हैं। Because if you obey God's laws and if you're diligent about it, you will diligently sow and then you will expect and confess that you will reap. क्योंकि अगर अच्छे हो कामकाजी में और आज्ञाकारी में, तो आप आज्ञाकारी होकर कामकाजी होकर आप बोने लगोगे और अच्छी कटनी को पाओगे। So what does a real believer do? तो एक अच्छा विश्वासी क्या करेगा? He doesn't go around just confessing that he's going to get good measure pressed down shaken वो together. लगातार अंगीकार करता ही नहीं रहेगा कि मैं अच्छी तरह बोऊंगा, दबा दबा कर हिलाया कर अच्छे माप से They पाऊंगा। like that part. वे उस भाग को अच्छा They चाहते like हैं, that part. वे उस भाग को अच्छा चाहते They हैं। don't like the first word, give. पहला भाग जो है दो, उसे नहीं They पहचानते, leave that out. वे उसे छोड़ देते They हैं। like that good measure pressed down shaken together running over. अच्छे माप से दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ इस भाग को पहचानते They हैं। don't like that to obey that part where it says give. जहाँ कहा गया है कि दो, उसकी आज्ञा को नहीं They पहचानते। like to get back good measure pressed down shaken together. वे सीधे जो है दबा दबा कर हिला हिला कर अच्छे माप से उसे पहचानते Now हैं। just imagine a farmer doing जरा that. कल्पना करके देखिए, किसान अगर ऐसा करे, He goes around saying, I confess that I'm going to have a bumper वो crop. कहता है कि मैंने अंगीकार किया है, बहुत ही जबरदस्त फसल में I'm पाने वाला going हूँ। to reap 500 lorry loads. मैं Of 500 whatever. ट्रक भरे लोड में लेने वाला And you हूँ। ask him, how much have you sowed? और उनसे पूछा कितना तुमने बोया है? He says, I've sowed in half an acre. वो पूछे कहेगा कि आधा एकड़ And में how मैंने are you बोया going है। to reap that much? कैसे तुम इतना काट सकते हो? Oh, but I have faith. I'm confessing. अरे that I will reap. मेरे पास विश्वास है, मैंने इतना अंगीकार No. किया है। नहीं, You know, sowing and reaping works very systematically. बोना और काटना जो है बिल्कुल सही रीति से काम करता है। You need to sow in order to reap. You must sow and you will reap accordingly. तुम्हें बोना बहुत ही जरूरी है और जैसे तुम्हें बोना है उसी के अनुसार So तुम्हें after कटनी पाएगा। talking about mercy, judgment, condemnation and forgiveness and all of that, telling us about why we should not sow judgment, should not sow condemnation, and then it says, give and it shall be given unto तो you. दया के बारे में, दोष के बारे में, दोषी के बारे में, क्षमा के बारे में सब बात करने के बाद हमसे कहा गया है कि दोषी मत ठहराओ, क्षमा करो, और उसके बाद कहा है कि दिया करो तो तुम्हें वापस दिया जाएगा। Because if you do the wrong thing, if you judge, it's going to come back to you. अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम दोषी ठहराए जाओगे, But if you're merciful, then you'll get mercy. अगर तुम दयावंत बनकर रहोगे तुम दया पाओगे, Forgiving, then you will get forgiveness. क्षमा करोगे तो आपको क्षमा After मिलेगी। saying that, it says, give and it shall be given unto और you. उसके बाद कहा गया कि दो तो वापस तुम्हें दिया So जाएगा। I think that's a closing statement that refers to all the things that have been said already in the last two verses. तो मैं सोचता हूं कि जो कुछ पहले वाक्यों में कहा गया है उसका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट यहां पर कहा गया है। It's simply saying, give mercy and it will be given back to you, good measure, pressed down, shaken यह कहा together. है कि दया दिखाओ तो तुम्हें दया मिलेगा, दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे If you पास give आएगा। judgment, it will be given good measure, pressed down, shaken अगर तुम together. दोष लगाओगे तो दबा दबा कर हिला हिला कर तुम भी दोषी ठहराए You जाओगे। give condemnation, it will be given back good measure, pressed down, shaken together. अगर तुम किसी को दोषी ठहराओगे तो वह भी दबा दबा कर हिला हिला कर तुम भी दोषी ठहराए If you जाओगे। give forgiveness, then you will get forgiveness, good measure. अगर आप क्षमा करोगे तो अच्छे माप से तुम भी क्षमा किए जाओगे। With the same measure that you mete out, it's going to come back to you. उसी रीति से जिस नाप से तुम नापते हो वही नाप तुम्हारे में Turn नापा with me to जाएगा। Matthew's Gospel, chapter 7. मेरे साथ बोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, Matthew's Gospel, chapter 7, मत्ती 7वां अध्याय verse 12. और 12वां वचन। There's a wonderful verse. बहुत ही अद्भुत सा एक वचन है। It almost sounds like common sense statement. ऐसा लगता है कि कॉमन सेंस स्टेटमेंट है यह। Lot of people use it like that. बहुत सारे लोग इसे ऐसे ही उपयोग करते A हैं। lot of people don't even know that it's in the Bible. बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये बाइबल में है। Sounds like very much like common sense, but Jesus says that statement is the essence of the Old Testament. पर यहाँ पर जो है यीशु इस वाक्य का जो सारांश है उसे यहाँ पर तुल्य रूप से बताता है। Look at verse 12. 12वां वचन देखिए। Therefore all things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them.
For this is the law and the prophets. इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। Have you ever heard people say, do unto others what you will have them do unto you? देखिए, दूसरे लोग जो तुम्हारे साथ करते हैं वैसे ही तुम भी उनके लिए कहो, ऐसा कभी कहते A lot सुना of है? them don't know that's in the Bible. बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो बाइबल में ऐसा है, But they think it's a good dictum to live by. पर वो समझते हैं कि जीने के लिए एक अच्छी बात है। Do unto others as you would like them to do unto you. जैसे वे तुम्हारे साथ करना चाहते हैं वैसे तुम भी उनके लिए करो। But Jesus actually said this. पर यीशु ने ऐसा कहा है। But notice every word here. पर यहाँ पे हर एक शब्द को जरा It देखिए। says, therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so unto them. इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। Whatsoever, therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you. जो कुछ, इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो। So that it's proving the same thing as we read in Luke chapter 6. लूका 6 अध्याय में जो हमने पढ़ा था वही जो है यहाँ पर प्रूव किया जा रहा है। Whatever you want, जो कुछ तुम चाहते हो, whatever you would like to receive, जो कुछ तुम पाना चाहते हो, you receive it by giving that very same thing. उसी चीज को वापिस देकर तुम उसे पा सकते हो। Therefore, all things whatsoever you would have men to do to you. इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य It तुम्हारे doesn't साथ matter करे, what it is. वही है यह बात। Whatever you would like others to do to you, you do to them. जो कुछ तुम मनुष्य तुम्हारे लिए करना चाहते हो वह तुम उनके So लिए this करो। law of sowing and reaping is a very broad तो principle. ये बोने और काटने वाली जो विधि है बहुत ही बड़ी विधि है। Everybody say whatever. सभी का ये जो कुछ, Whatsoever you would that others would do to you. जो कुछ मनुष्य तुम्हारे लिए करें, So it covers everything. तो ये सभी चीजों को उसके अंदर लाती है। Whatever. जो कुछ भी हो, Whatever you want to get from others, that you begin to give. दूसरों से जो कुछ तुम चाहते हो वो देना शुरू कर दो। Now that's he says, this is the law and the prophets. और कहते हैं यही जो भविष्यवक्ताओं और A व्यवस्था lot of की people don't बात है। understand what that means. अब उसका अर्थ हम नहीं जानते हैं। The law and the prophets means literally the Old Testament. व्यवस्था और भविष्यता का मतलब है पुराना नियम। In the Old Testament was separated into two main portions. पुराना नियम जो है दो विभिन्न भागों में बटा गया है। The first 5 books of the Bible in the Old Testament was called as the law. पहले 5 पुस्तक जो बाइबल के हैं उन्हें व्यवस्था की पुस्तकों के रूप में जाना जाता है, And the rest of them are grouped together and called the prophets. और बाकी सभी पुस्तकें जो हैं भविष्यता की पुस्तकों के रूप So में देखा जाता है। oftentimes you would hear people in Jesus' time refer to the law and the prophets. तो अक्सर हम देखते हैं यीशु भी कहता है कि व्यवस्था की पुस्तकें और भविष्यता की पुस्तकें। Jesus himself talks about it in many places. यीशु खुद जो है इसके बारे में बहुत सारी The जगह law बात and the करता है। prophets. व्यवस्था और भविष्यता It's simply he's saying the Old Testament. साधारण उसमें कहता है कि पुराना नियम, He says this is the Old Testament. कहता है कि यही पुराना नियम है। Now some people think the Old Testament is a little different than New Testament. The Old Testament and the New Testament are two different things. कुछ लोग समझते हैं कि पुराना नियम और नया नियम जो है दो विभिन्न पुस्तकें हैं। Really, in essence, it's the same. सारांश में देखा जाए तो दोनों एक ही पुस्तक है। It's the same in essence. सारांश में एक ही है। It's not one message in the Old Testament and another message in the New Testament. पुराने नियम में एक संदेश और नए नियम में एक संदेश नहीं है। Some people think in the Old Testament there is another way of salvation. In the New Testament there is now new way. कुछ लोग समझते हैं कि पुराने नियम में उद्धार का कोई और रास्ता है और नए नियम में कोई और नया रास्ता है। In the Old Testament, God was a very mean God. He killed people and did all kinds of atrocities. In the New Testament, he got converted and became a good God. पुराने नियम में परमेश्वर बहुत ही नीचा परमेश्वर था, लोगों को हत्या करता था, मारता था, पर नए नियम में ऐसा नहीं है। परमेश्वर सभी लोगों से प्यार से बर्ताव करता Now है। he comes and dies for us. अब वो आकर हमारे लिए मरता है। You think God changed? क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर बदल गया? From Old Testament to New Testament? पुराने नियम और नए नियम में बदलाव है You क्या? see, it is one and the same. God is one and the same. His principles are one and the same. Therefore, I say to you, if this is the essence of the Old Testament, I say to you, this is the essence of life itself. The Old Testament and the New Testament and all of life. परमेश्वर एक ही है, एक ही तरह का परमेश्वर है, उसके सिद्धांत भी एक ही जैसे हैं। अगर परमेश्वर एक ही तरह है तो मैं कहता हूँ जिंदगी में भी तुम्हारे जिंदगी की जो विधियां हैं वो भी एक ही तरह की होनी For चाहिए। now and forever, this is God's great law
law and अब principle. और सदा के लिए यही परमेश्वर की महान सिद्धांत है और वो सदा के लिए Everything रहेगी। hangs on this. सब कुछ जो है इसी पर You लटका want हुआ to है। know the essence of life? क्या आप जीवन के सारांश को जानना चाहते You हो? see, we can make our life a lot better than what it is today. देखिए, हम अपनी जिंदगी को जो आज है उससे और बेहतर बना सकते Many हैं। people would like to improve the quality of their life, but they don't do what is necessary to बहुत do. सारे improve लोग it. जो अपने जीवन के स्तर को और बेहतर बनाना चाहते हैं, पर उसे बेहतर बनाने के लिए जो करना है उसे They नहीं don't know करते हैं। exactly what to do to make it better. उसे और बेहतर बनाने के लिए जो उन्हें करना है वो उसे नहीं They जानते have a हैं। terrible marriage. बहुत ही बुरी शादी हुई, They don't know how to make it better. उनको नहीं मालूम कैसे बेहतर बनाया They have a जाए। terrible financial life. बहुत ही बुरी आर्थिक स्थिति They है, don't know how to make it better. वे नहीं जानते कि और बेहतर कैसे Terribly बनाएं। unhappy inside. वे भीतर से बहुत ही They नाखुश don't हैं, know how to make it better. वे नहीं जानते कि और बेहतर कैसे They're बनाएं। terrible in their relationship with others. दूसरों के साथ जो रिश्ते हैं उसको बहुत ही बुरा सदमा Can't पहुंचा get है। along with anybody at work. वे जिससे भी जाके बात करते काम Can't नहीं get along होता, with anybody in church. कलीसिया में किसी से बात नहीं करते, They can't get along with वे anybody. किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाते, They don't like anybody. वे किसी को पसंद ही नहीं करते। Life is so difficult for them. जिंदगी उनके लिए बहुत ही मुश्किल बन Life गई is है। like hell for them. जिंदगी उनके लिए नरक के समान बन And गई they है, don't know what to do. पर वे नहीं जानते क्या किया Every जाए। week they take the Bible, go to church, वे बाइबल को लेकर जब कलीसिया में जाते हैं, give the offerings. चंदे देते हैं, दान दशमांश And देते हैं, sometimes they say, in heaven we're all going to be together, brother. It's going to be a wonderful place. और वो in कहते हैं कि heaven. स्वर्ग में हम सब कुछ पाने वाले हैं, स्वर्ग में बहुत ही अद्भुत सा जगह Here हमें मिलने it's वाला all है। hell. यहाँ पर तो सिर्फ नरक But है, heaven is going to be wonderful. स्वर्ग बहुत ही अद्भुत होने वाला है। They think when everybody gets to heaven, they're all going to be changed. So life is वे going to सोचते become हैं better कि for जब them. स्वर्ग में चले जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, जिंदगी बहुत अच्छी वहां पर My होगी। mother-in-law, believe me, is going to be a lot better in heaven. So it's going to be a lot easier. मेरी सास जो है वहां पर नहीं होगी, तो इसलिए मेरे लिए स्वर्ग बहुत अच्छा होगा। Hello. हेलो, They don't know what to do to make it better now. वे नहीं जानते कि अभी उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या किया You know, जाए। you can make it better now. आप अभी उसे बेहतर बना सकते हो। That is why Jesus says, this is the essence of life. इसीलिए यीशु कहता है कि यही जीवन का एक सारांश है। When he said, this is the law and the prophets, you can write right next to it, this is the great principle of life. जब वो कहता है कि व्यवस्था और भविष्यवाणियों की बात यही है, तो तुम उसके बगल में बाइबल में लिख सकते हो कि यही जीवन का This is सारांश है। the greatest life principle. यही जो जीवन का एक महान सिद्धांत है। Do unto others what you would have them do unto you. जो दूसरों से तुम चाहते हो उसे तुम खुद उनके लिए करो। You're having a difficult time with a person, एक व्यक्ति के साथ बहुत ही मुश्किल से समय बिता रहे हो, the mother-in-law. अगर सास हो, What would you like the mother-in-law to do unto you? क्या चाहते हो कि सास तुम्हारे लिए करे? Do to her first. उन्हें पहले वही काम करो। Not whatever you like to do, but whatever you like her to do for you. जो उनसे तुम चाहते हो उनके लिए तुम जाकर वही काम पहले करो। Do what you would like her to do to you. जो तुम उनसे चाहते हो उसे जाकर तुम पहले करो। Do what your enemy would like to do unto you, do it to him. जो तुम्हारे शत्रु से तुम चाहते हो उसे पहले जाकर उसे तुम करो। Whatever you like for them to do to you, do it, and you will find that immediately your life will turn around. जब तुम ऐसा करोगे तो मैं कहता हूं तुरंत तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। You will see that the quality of your life on this earth, in your home, in your work, in your existence here, it will improve right now. तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे काम के स्थान पर, तुम्हारे हर एक जगह में जो है तुम्हारे जिंदगी का जो स्तर है वो अपने आप बदलने लगेगा। You can turn it around. आप अपने आप बदल सकते हो। Do to others what you would like them to do to you. जो दूसरे तो तुम चाहते हो वही उनके लिए करो। Hello? हेलो, You like them to give to you? क्या आप चाहते हो कि वो तुम्हें दें? Then you give first. तो तुम पहले दो, Then you'll see that coming back. उसके बाद आप देखो कि वो अपने आप तुम्हारे पास So वापस many आएगा। ways it will come back. बहुत बड़े माप से तुम्हारे पास आएगा। Right? ठीक है? But people always expect, oh, my uncle, he's got so much, he has not given me anything. पर लोग हर वक्त अपसेट होते हैं, कहते हैं देखो ब्रदर मेरे अंकल है ना, उन्होंने कुछ मुझे नहीं दिया Oh, है, he won't give one penny. वो एक फुटी कौड़ी भी नहीं देते। Well, why don't you give him something? हम क्यों, तुम क्यों नहीं उन्हें देते?
Don't talk about how that man is not giving. यह मत बात कीजिए कि वो आदमी कैसे नहीं देता है. Sometimes preachers, have a rough time when they come and complain to me that nobody is giving. कभी कभी प्रचारक जो है बहुत ही रफ टाइम मेरे पास जब बात करते हैं तो उन्हें लगता है जैसे कुछ लोग देते That's नहीं है. it, 1 hour sermon after that. उसके बाद 1 घंटा प्रचार उन्हें करना पड़ता है. I don't like preachers talking like that. प्रचारक ऐसे बात करे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं But है. sometimes they do, पर कभी कभी ऐसे बात करते हैं. There are also people, so you got to understand, they don't know how to make it better. वे भी लोग हैं, उनके पास भी समस्या है, उनको कैसे बेहतर किया जाए तुम्हें सिखाना They're चाहिए. frustrated, they're angry, they're doing ministry so sincerely and faithfully and all of that, and they're trying so hard and they feel like nobody's वे helping बहुत me. गुस्से में आते हैं, बहुत ही थके हुए आते हैं, तंगी दिखते हैं, कहते हैं कि कैसे कुछ लोग कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी हमें देते तक नहीं I है. asked one man, what did you give? एक आदमी से मैंने पूछा तुमने उन्हें क्या दिया है. He says, only they have to give. कहने लगे कि हम कहां से देंगे, उन्हें ही देना होगा, हम क्या देंगे उन्हें. I said, you have something better to give, man. मैंने कहा तुम्हारे पास कुछ बेहतर है उनसे देने के लिए. You have the word of God, the good word of God to give. तुम्हारे पास अच्छा परमेश्वर का वचन है जो तुमने दे सकते हो. Have you given them the word? क्या आपने कभी वचन दिया है I'll उन्हें? tell you, if you give them the word in all of its fullness, in all of its glory, and raise people up from where they are and bring them out of their troubles and speak the words of life, bringing life to them, then you will see मैंने उससे something. कहा अगर तुमने कुछ और बेहतर दिया वचन को लेकर उनके जीवन को स्तर को और बढ़ाने के लिए, उनके और मुनाफों को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन के स्तरों को और ऊंचाइयों तक जाने के लिए अगर तुमने परमेश्वर का अच्छा वचन दिया हो Sometimes तो why वो they देंगे. don't get is they're always scolding people. इसके बजाय वो क्या करते हैं, हर वक्त लोगों को डांटते रहते हैं. What good are you? तुम क्या अच्छे हो. God sent his son Jesus, he died, but what did you give? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है मरने के लिए तुम्हारे लिए. तुमने यीशु को क्या दिया है. What did you give this month? इस महीने तुमने क्या दिया What है. did you give last month? पिछले महीने तुमने क्या How दिया much है. have you given this year? इस साल तुमने कितना दिया है. Why are you not giving? क्यों अभी नहीं दे रहे हो. That's why you're not getting. इसीलिए तुम कुछ नहीं पाते हो. Because nowhere in the Bible it says if you get up and scold people, you'll get more money. बाइबल में कहीं नहीं बताया गया कि तो अगर तुम खड़े होकर प्रचार करोगे तो ज्यादा लोग तुम्हें देंगे. No. नहीं. Bible says this is the essence of life. Whatever you would like others to do to you, you do to them. बाइबल कहता है कि यही जो जीवन का सारांश है, क्योंकि जो तुम लोगों से चाहते हो उसे तुम वापस उन्हें करोगे तो वे अपने आप तुम्हें देने लगेंगे. Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God
other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for